रिसर्च का एक मेन पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आते हैं राइट ग्रामर एंड राइट इंग्लिश से। और अगर आप वही नहीं कर पा रहे हो तो आपके रिसर्च के रिजेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। Hello everyone, welcome back to the channel. I am Dr. Surabhi Acharya, founder of Sanraj Education. I am working with more than 100 research scholars and almost हर किसी की सिर्फ और सिर्फ 3 pain points हैं: time, confidence and money. And today in this video, I'll help you cut down your extra time, boost your confidence and help you save those extra bucks from which you can buy your favorite dress, a donut or a much needed vacation from your PhD burnout. रिसर्च की जर्नी में जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक सिलेक्शन, आपका रिसर्च क्राइटेरिया है, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी रिसर्च को ग्रामेटिकली सही लिखो, आपके टेंसेस बिल्कुल ठीक होने चाहिए और आप जो बात कहना चाह रहे हो अपनी लैंग्वेज में वो आप एक्चुअली लिख भी रहे हो। सॉल्यूशन है एक ऐसे टूल के बारे में पता करना जो आपका टाइम एंड एफर्ट दोनों सेव करे एंड ऑल्सो हेल्प यू विद एक्यूरेसी। यूजुअली स्टूडेंट्स प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग को एक ही चीज समझते हैं। सो लेट मी बर्स्ट द बबल फॉर यू। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग दोनों डिफरेंट है। एडिटिंग लुक्स एट द बिगर पिक्चर, structure, flow, clarity, argument strength. Whereas proofreading checks the surface layer: grammar, spelling, punctuation, tense, and sentence agreement. Proofreading is the final polishing after you've done your thinking work. And now let's start the demo. Go to Jenni AI and वहां जाके एक न्यू डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करो और आपका जो भी एक पैराग्राफ है उसको जेनी पे पेस्ट करो। उसके बाद सिंपली सिलेक्ट all the document and वहां नीचे राइट क्लिक करके you get an option of proofreading. And now just wait. जेनी पूरा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली रीड करके आपको एक पैराफ्रेज्ड एंड ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन प्रोवाइड करता है। Just read it once, check everything, and if you think this is perfect, simply accept the document. Jenni AI will also help you to auto-complete the document in proper academic formation. And before exporting, simply go to review and run the claim confidence option. यहाँ पर जेनी आपको बताता है अगर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। एंड यू सी ऑल द टेक्स्ट आर ग्रीन। दिस मीन्स हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ग्रामेटिकली बिल्कुल परफेक्ट है। और टाइम आप देख सकते हो 10 सेकेंड से भी कम लगे। एंड नाउ सिंपली एक्सपोर्ट योर डॉक्यूमेंट एंड एंजॉय योर research without any grammatical mistake and perfectly structured sentences. प्रॉब्लम आइडिया नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर है। प्रॉब्लम वीक ग्रामर, वीक इंग्लिश एंड वीक सेंटेंस फॉर्मेशन है। तो अगर आपको एक ऐसा टूल मिल रहा है जो आपको हेल्प कर रहा है आपकी ग्रामर को ठीक करने में, पंक्चुएशंस प्रॉपर्ली ऐड करने में और आपकी सेंटेंसेस को प्रॉपर फॉर्म करने में, at Sanraj, we always tell our scholars to use the 50, 30 and 20 method: 50% manual work, 30% frameworks, and 20% use of AI structures. You can also use a simple 3-step method: REF, rough pass, edit with AI, and final judgment to improve your text. Proofreading research का एक important part है, इसको मिस मत करना। And if you want to save your time, money, and boost your confidence, Jenni AI is your one-stop destination. आपका रिसर्च आइडिया जितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आपका ग्रामर मेसी है, अगर आपका स्ट्रक्चर मेसी है, अगर आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे हो, तो आपका स्ट्रांग आइडिया, आपकी स्ट्रांग रिसर्च दोनों ही ट्रैश है। I hope this video brought some clarity and also help you understand किस तरीके से आप अपने आप प्रूफ रीड कर सकते हो and why proofread is important in your research. I'll be meeting you soon in next video. Till then, take care. Bye-bye.